Hello, welcome to this video. Myself Vaibhav Patil, Faculty of Geography and Environment at the Takshila School of Civil Services. And today we are going to see the one important topic from the geography section, especially or disaster management section, cloudburst. Recently आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस है वो वॉश्ड अवे हो गए या फिर बहुत सारी लाइव्स प्रॉपर्टी को लॉस हो गया. स्पेशली आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. द रीजन इज ऑब्वियसली क्लियर, क्लाउड बस्ट. वैसे भी आपको पता है इससे पहले केदारनाथ वाला जो क्लाउड बस्ट हुआ था, उत्तराखंड में जो अदर क्लाउड बस्ट हुए थे, तो रिसेंटली दिस फेनोमेनॉन हैज बीन इंटेंसिफाइंग frequently because of the global warming, climate change. So in short, the intensity and magnitude of these incidents or these processes has been increasing in recent times. So let's first understand what do you mean by this cloud burst. But before going to that, we have to learn a little bit background regarding this cloud and cloud burst. So let me to first clear this basic terminology associated with this cloud burst. Then we will move again to this topic. So as you know, there are mainly three types of rainfall. When I use the term types of rainfall, that means the mechanism with which air is uplifted, it get adiabatically cool, forms condensation, that means cloud formation, and that clouds give the rains. This entire process is called what? Types of precipitation. When I use the word types, that means what? The mechanism with which air is uplifted and gets adiabatically cool, forms condensation and gives the precipitation. Cloud gives the precipitation. So there are three mechanisms with which we can actually में air uplift हो जाती है. First is what? Convectional precipitation. Second, orographic precipitation. Or this precipitation is also called relief precipitation or relief rainfall as well. And third is cyclonic or frontal rainfall. Frontal rainfall. So ये लेक्चर में सारे तीनों में चीजें क्लियरली एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस थोड़ा सा इससे हम आइडिया ले लेते हैं कि क्लाउड बस समझने के लिए बस. So as you know, convectional rainfall mainly occur in a region where you observe unequal heatings or differential heating. Especially this type of rainfall is restricted in terms of latitude. अगर मैं कहूँ specifically tropical areas or lower latitude. What happens in this type? Let's suppose sun rays coming to the ground surface and this ground surface gets heated, and let's suppose the air in contact with this ground surface get warm, and after getting heated, this become light, and this light air rises in the atmosphere. When it rises in the atmosphere, it gets adiabatically cool. That means the heat component of that air remains the constant, and after adiabatically cooling, it forms the condensation. Condensation, that means cloud formation. Cloud is, as you know, the one of the form of condensation, and this clouds gives precipitation. This is the phenomenon, or you can say this is the actual process in this convectional precipitations. So this type of rainfall mainly restricted in terms of latitude, especially lower latitude, as well as the season of the year, especially summer season, because unequal heating summer में ही हो पाएगा, and the time of the day, especially 2 to 4 phenomenon, 2 to 4 PM phenomenon, क्योंकि 10 से 12 2 बजे तक क्या होगा, वो हीटिंग होगा, कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होंगे, वो क्लाउड फॉर्म होगा, तो 2 से 4 में फिर क्या होगा, बारिश होगा, और 4 के बाद क्लियर स्काई होगा. तो दिस इज द नॉर्मल फेनोमेनन, स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन में तो ये पाया जाएगा. बट जो सेकंड फेनोमेनन है या फिर सेकंड टाइप है प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, this type of precipitation mainly found in hilly areas. Let's suppose this is the air or moist laden air, especially moisture है उसके पास, and when it blow and in between there or in their path, in their course of flowing, let's suppose any obstacle comes, especially mountain or hilly area, then because of this mountain, because of this topographic barrier, this air forced to uplift. And because of this upliftment, as this wind already has a moisture, water vapor in it, so as this air forced to uplift, it get adiabatically cool, and obviously from the clouds and gives precipitation heavily on this side. And this side of mountain where wind is coming, moist laden wind is coming, it's called windward side. Windward side, and the side opposite to windward called leeward side.
दिस आफ्टर कंडेंसेशन आपको पता है बारिश होंगी तो ऑब्वियसली विंडवर्ड साइड पे ज्यादा बारिश होगी, तो आप देखेंगे इस साइड पे यूजुअली जो फॉरेस्ट होगा वो भी एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन टाइप होगा। लेकिन जैसे ही एयर क्रॉस करेगी, व्हेन दिस एयर क्रॉसेस दिस समिट आफ्टर शेडिंग द व्हाटएवर मॉइस्चर हैव इन इट, so it becomes dry, and when it descend from this opposite slope, leeward side, it again get warm, so relative humidity further decreased, and again it deny the concept of precipitation in this area. So that's why, that is the main reason behind the forming here rain shadow zone. Especially one of the finest example is that wherever coastal mountain and their nearby area, especially opposite side to the windward side, have the drought prone area, especially Maharashtra, Karnataka. आप देखेंगे ये मान लीजिए इंडियन कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जब विंड आती है तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है ये ड्रॉट प्रोन होता है या फिर रेन शैडो जोन होता है। दिस इज हैपन विद एनी टाइप ऑफ माउंट, स्पेशली एंडीज रॉकीज में भी ये फेनोमेनन हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द ओरोग्राफिक। सो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इन दोनों के साथ ही है क्लाउड बर्स्ट को लेके। तो अब आते हैं वापस अपने क्लाउड बर्स्ट पे। तो क्लाउड बर्स्ट में व्हाट विल हैपन, सी क्लाउड बर्स्ट इज एक्चुअली फैंसीफुल टर्म यूज्ड टू for the sudden concentrated downpour of the water, and the area generally usually affected is quite small, and this is perhaps the best reason for the cloudburst is the local convectional rising of the air. That means, let's suppose there is a topographic barrier for this wind flow, moist laden wind, and there is an unequal heating of that particular surface. So these two factors multiply, and that led to the what, rising of air or updraft in air with a speed 60 to 120 किलोमीटर पर आवर। और उसका ही नतीजा क्या होता है कि वो तो अडाबेटिकली कूल हो जाएंगी, कंडेंसेशन होगा, ड्रॉपलेट तो फॉर्म होंगे लेकिन वो फॉल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से बहुत फास्टर अपड्राफ्ट आ रहा है या फिर राइजिंग एयर आ रही है, तो वो क्या करेगी, उसको उठा के लेके जाएगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ऊपर जाके स्टोर हो जाएंगे, और बिकॉज ऑफ द राइजिंग एयर अपड्राफ्ट, फास्ट अपड्राफ्ट, ये क्या होगा, फॉल नहीं होगा। और बाद में क्या होता है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा वाटर, और स्पेशली क्यूमुलनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। और क्यूमुलनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं, एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा बारिश करेंगे, कई बार थंडर लाइटनिंग भी हो जाता है। इफ लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई ग्लेशियल लेक बना हो, एंड एज यू नो ग्लेशियल लेक मेड अप, उसमें मोरेन्स होते हैं, लैंडफॉर्म मोरेन्स, अगर वो क्रॉस कर दिया या फिर मान लीजिए वो ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली एक फेनोमेनन प्रोमिनेंट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। और मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर सेटलमेंट होगा नीचे, तो ऑब्वियसली एक टाइप का मास मूवमेंट हो जाएगा, एंड इट विल आल्सो क्रिएट हैवोक, स्पेशली अफेक्टेड द लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हो जाए। तो दिस इज अबाउट ग्लोब। और अगर ये स्टीप स्लोप होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर जो पानी यहाँ पे बरस रहा है, ऑब्वियसली वो आएगा, फ्लैश फ्लड बन जाएगा। सडनली वो जो लिमिट है चैनल की वो क्रॉस करके जो रेसिडेंशियल एरिया वहां पे घुस जाएगा। तो यही नतीजा है, क्लाउड बस्ट यही हो जाता है। मतलब क्लाउड बस्ट nothing but the is a fanciful term used to describe the sudden very concentrated downpour of the water, and area affected usually is very quite small, around 20 to 30 square kilometer area. अगर इसका मैं टेक्निकल डेफिनेशन दे दूं, so our technical department regarding the meteorology, that is IMD, came out with definition. Indian Meteorological Department define the event where you will receive more than 100 mm rainfall within an hour. More than 100 mm of rainfall within an hour, then the particular process or phenomenon, this type of rainfall is considered as a cloud burst as per this IMD. Sometimes you will receive less than as well this, but more than 10 mm per hour rainfall also categorized as a mini cloud burst. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से इनका जो इंटेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। वैसे भी आप एवरी ईयर कहीं ना कहीं न्यूज़ सुनोगे, हिमालय हो, इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स हो, तो यहाँ जहाँ पे हिली एरिया होगा तो वहाँ पे ये फेनोमेनन होती है। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्लाउड बर्स्ट। यस, वी हैव द इमेजेस ऑफ दैट, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। यस, सो जो भी मैंने क्लाउड बर्स्ट फेनोमेनन वो इस डायग्राम में एक्सप्लेन की गई है, और वाई फोरकास्टिंग क्लाउड बर्स्ट इज अ चैलेंज वो भी इसमें दिया गया है। सो आई होप कि आपको ये रीडेबल होगा, दिख रहा होगा, तो आप पढ़ लीजिए इसको। सो
That's all from my side. Thank you. Have a nice day.